अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी। एंड इसे मैं अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करूंगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ तो ये मेरे फेस पे एक शाइन लेके आएगा। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वैसलीन की लिप बाम। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कलरबार का प्राइमर। ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे रखेगा और साथ ही साथ जो मेरे स्किन के ओपन पोर्स है ये उसको मिनिमाइज करेगा, जिससे मेरा मेकअप स्वेट प्रूफ रहेगा। और साथ ही साथ ये प्राइमर ऑयल को भी कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा लिया है और कुछ इस टाइप में मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। एंड फेस के साथ साथ मैं इसे नेक पर भी अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ निक्स टोटल कंट्रोल फाउंडेशन। ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ब्राइडल मेकअप लुक कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये काफी लाइट वेटेड फाउंडेशन है। सो अगर आपको इसकी लाइट कवरेज चाहिए तो आप इसके 1 या 2 ड्रॉप यूज कर सकते हो, और अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप 2 से ज्यादा ड्रॉप्स यूज कर सकते हो, और अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसके 4-5 ड्रॉप्स यूज कर सकते हो। सो इसे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी।
फाइनल मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये ब्राइडल मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स या किसी के भी साथ जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ नीचे रेड बटन है, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साइड में ही छोटी सी घंटी है, उस पर भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिल सके। सो बाय गाइस, लव यू।